electric potential at any journal point due to the dipole. Journal point means neither axial nor equatorial, it may be any point. Then again consider an electric dipole having charges minus q and plus q separated by some distance to a and O be the center of the dipole. Consider there is a point P at a distance r from the center of the dipole. Now, by joining these points from P, suppose this is R1 and R2, draw a perpendicular. This point is suppose M and this is R1 minus R2 and theta be the angle which gives the direction of point P. मीन्स फॉर जर्नल पॉइंट हमने एक डाइपोल कंसिडर किया, चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू जिनका बीच का गैप 2a है. अब सेंटर से कोई भी एक पॉइंट P मान लिया जो r डिस्टेंस पर है, जहां पर हमें नेट पोटेंशियल फाइंड करना है. Q1 माइनस क्यू और प्लस क्यू से ये पॉइंट R1 R2 डिस्टेंस पर है. अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये अगर हम M पॉइंट से और इन पॉइंट का भी नेम मेंशन करते हैं A और B, और M और B से अगर P ऑलमोस्ट इक्वलेंट डिस्टेंस पर है बिकॉज P इज फार अवे, then it will be R1 minus R2. Now electric potential at point P due to charge minus Q, it is V1 1 upon 4 pi epsilon naught minus q upon r1. Similarly, electric potential due to the second charge is 1 upon 4 pi epsilon naught plus q upon r2. Okay. Okay, this is 1 upon 4 pi epsilon naught minus q upon r1, 1 upon 4 pi epsilon naught plus q upon r2. Then net potential at P, V equals to V1 plus V2. Put the values 1 by 4 pi epsilon naught minus q upon r1 plus 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r2. We can take q upon 4 pi epsilon naught as common. So it is 1 upon r2 minus 1 upon r1. After simplification, it may be q upon 4 pi epsilon naught r1 minus r2 upon r1 r2. यहाँ तक हो गया है. Okay. Now as P lies far away from O, therefore from this triangle we can calculate r1 minus r2. r1 minus r2 is base, this is perpendicular, base upon hypotenuse is cos theta. Then r1 minus r2 upon 2a is equal to cos theta. r1 minus r2 may be 2a cos theta. Also r1 r2 is approximately r square. r1 r2 is approximately r square. Now substitute these values in this formula. Therefore V may be written as q upon 4 pi epsilon naught r1 minus r2 is 2a cos theta upon r1 r2 is r square. Now q into 2a cos theta upon 4 pi epsilon naught r square. ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है. हम जानते हैं q into 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट. तो v इजिकल टू क्या हो जाएगा, p cos थीटा अपॉन 4 pi epsilon naught r स्क्वायर. अब इसे r से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर
अगर हम इसे r से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, बिकॉज थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन r एंड p, तो ये हो जाएगा पी आर कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, and it may be written as p dot r upon 4 pi epsilon naught r cube. This will be the net potential. Now this is the general solution. अब अगर हम इसमें थीटा को पुट करें, अगर हम ये कंसीडर करें कि थीटा जो है वो 0 या 180 डिग्रीज है, तो अगर थीटा 0 और 180 डिग्रीज होगा तो जो कोस की वैल्यू होंगी वो क्या हो जाएंगी, कोस की वैल्यू हो जाएगी 1, तो जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा पी आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी आर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा जो हमारा आंसर था एक्सियल लाइन का। और इक्वेटोरियल के लिए अगर हम निकालते हैं तो थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो पोटेंशियल हो जाएगा 0। यानी इक्वेटोरियल पॉइंट के इक्वेटोरियल लाइन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, 0। यानी कि ये जनरल सॉल्यूशन है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सियल एज वेल एज इक्वेटोरियल पॉइंट्स। Now we are taking a problem, numerical problem. Find the potential at the center of a square of side under root 2 meter which carries at its 4 corners charges plus 2 10 की पावर minus 9 coulomb, 1 10 की पावर minus 9 coulomb, minus 2 10 की पावर minus 9 coulomb and plus 3 10 की पावर minus 9 coulomb. So for solving this, first of all I am going to draw the diagram. Suppose these points are A, B, C and D. Now the charges are Q1 is suppose plus 2 10 to the power minus 9 coulomb. This is Q2 suppose 1 10 to the power minus 9 coulomb. This is Q3 minus 2 10 to the power minus 9 coulomb. And it may be Q4 3 into 10 to the power minus 9 coulomb. Okay. As the side of the square is given under root 2 meter each. Now we wish to calculate the potential at the center O. Now we can calculate the potential due to the first charge at this point, second charge at this point, third charge at this point, fourth charge at this point. And by Pythagoras theorem, this BD from this triangle ABD, BD may be 2. This is 1. This will be 1. This is 1. This will be 1. Now the distance from all the charges from the center is 1. Then by the relation, potential at the center is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R plus Q2 upon R plus Q3 upon R plus Q4 upon R. Now put the values. 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to the power 9. Q1 is 2 into 10 raised to the power minus 9 upon R is 1 plus 1 into 10 raised to the power minus 9 upon R2 is again 1 plus this is minus 2 into 10 raised to the power minus 9 upon 1 and then plus 3 into 10 raised to the power minus 9 upon 1. After simplification, this is 9 10 raised to the power 9. These two are cancelling out. This is 1 10 raised to the power 9 and 3. This is 4 into 10 raised to the power minus 9. 9 4 is 2, 36 into 10 is to the power 9 minus 9. It is equal to 36 volts.